Hello friends, welcome back to another video. In this video, I will be providing you the solution of our challenge be Bop Boop, a chatbot challenge, contact center AI's last lab, that is Dialogflow Logging and Monitoring in Operations Suite. Okay, so before starting the solution, I simply want to inform you that I already uploaded the solution of the previous 7 labs that you can access by simply clicking on the I button on the top right icon. जैसे ही top right icon पे जो I button है उस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस जितनी भी लैब है जिनका मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है वो आप एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर आपकी कोई भी लैब बची है तो वो कंप्लीट कर लें. ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट दिस लैब. वेट फॉर द पेज टू बी लोडेड. Once the page gets loaded, simply click on the Start Lab button. Once you click on the Start Lab button, you will get the credentials. As you can see, there are total 8 tasks that we need to perform. So the lab would be a little bit lengthier. Simply click on the Open Go console and open it in private window or in incognito mode. Otherwise, you will face certain issues. आपको पता ही है कि email ID अपने आप पेस्ट हो जाएगी. Click on the next button. We don't need to copy paste the email ID. We need the password. So password is given to us. ये password है, copy करेंगे. Come back to here, paste it here. Click on the next button. A welcome message will arise. We need to accept it. ओके, इन माई केस इट डजंट शो एनी वेलकम मैसेज. इट मीन्स कोई टर्म्स एंड कंडीशन का पॉपअप भी नहीं आएगा. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि कई बार एक वेलकम मैसेज आता है, उसके बाद इसी पेज पे एक टर्म्स एंड कंडीशन का पॉपअप आता है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, कई बार नहीं आता है. तो अगर आपके केस में आए और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो कोई भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या करना है. अगर ऐसा ही चले तो कोई बात नहीं. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इन द एपीआई एंड सर्विसेज, क्लिक ऑन द लाइब्रेरी बटन. वेट फॉर द पेज टू बी लोडेड. Once the page get loaded, into the search bar type Dialogflow or simply type dialog and hit enter button. Because we need to enable our API name as Dialogflow API, select this. We need to enable it. Click on the enable button and wait for it to get enabled. Once the API get enabled, you will see an interface like this. So now what you need to do, come back to the lab, scroll down, keep scrolling to the task 1 and right click on the Dialogflow console and open it in new private window or in incognito mode. Wait for it to get loaded. So once it's get loaded, maybe in your case, it will show a pop-up of terms and condition. You need to tick box that and click on the agree button. Okay. Now click on the create agent. Once you are done with that, come back to here, scroll down. We need the agent name. So copy this agent name. Be careful while copying the agent name because we don't need any extra spacing. अगर कोई भी extra spacing हुई तो name में error आएगी. Now into the default time zone, select America Denver. So scroll up and select America Denver. Into the Google project ID, select your project ID. Now click on the create button and wait for the agent to get created. So once it's get created, simply come back to the lab, click on the check my progress. You will get the green tick in the task 1. You can see assessment is complete. Now in the task 2, we need to download a zip file. So simply click on this button, this file button, and a zip file will be automatically started to be loaded. Let me see. Open it in private window. मेक श्योर आप इसे प्राइवेट विंडो में ही ओपन करें, इनकॉग्निटो मोड में ओपन करें, नहीं तो ओपन नहीं होगी. ओके, और सेव दैट फाइल वेर एवर यू वांट. आई एम सेविंग इट इन माय डाउनलोड्स फोल्डर. नाउ कम बैक टू द कंसोल and click on this gear icon. Now we need to import this. So simply click on the export and import. Click on the import from zip. So click on the select file. We need to select that file that we downloaded. So this is the file. Select it. Now here type import. IMPORT and all must be in the capital. सब कुछ import में जो भी है वो पूरा capital में होना चाहिए. Click on the import button and you can see our agent import successfully. Click on the OK button. Click on the cancel button. Come back to here. Scroll down. Click on check my progress. You will get the green tick in the task 2 also. So we are done with this. Now head towards the task 3. So simply come back to here and click on the integrations. Wait for the page to be loaded. Under the integrations, click on this Dialogflow phone gateway. Wait for it to get loaded. Now click on the next button. Now scroll down, click on the create button. Wait for it to get created. Once it's get created, simply dismiss this and click on the close button. Now come back to the lab, scroll down, click on the check my progress. You will get a green tick here also. Wait for it. Let me check if we made any error. Click on the check my progress. You can see that we get the green tick. If in first case by clicking on the check my progress it throw any error, अगर पहली बार में कोई error आए then simply try to 2 to 3 times. You will definitely get a green tick. मैंने कुछ extra नहीं किया, पहली बार में error आई थी, दूसरी बार में green tick मिल गया. Okay, now scroll down to the task 4. Okay, now we need to navigate to the Firestore. So simply come back to here, open the cloud console. Under the search bar type Firestore. Search for the Firestore. Open this Firestore. Wait for it to get loaded. Here under the native mode, select native mode. And under the selections of the location, select NAM5 United States. Click on the create database and wait for it to get created. ये 1 से 2 मिनट में create हो जाएगा. Until that time, make sure you hit the subscribe button to the channel and hit the like button. और इस लैब में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में स्क्रीनशॉट के साथ मुझे अपनी एरर सेंड कर सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी आवर डाटाबेस इज नाउ क्रिएटेड. So once it's get created, click on the start collection button. Under the collection ID, we need the collection ID. So the collection ID is this one, reservation. Copy it very carefully. Don't copy any extra spacing. Paste it here.
We need the document ID. So the document ID is 100, 100. Now we need the field name. So the field name is this one. Copy it very carefully. ध्यान से copy करेंगे. Come back to here. Paste it here. Now make sure field type is set to the string. Now field value is given to us. So come back to here. Copy the field value. That is this one. Copy it very carefully. Don't copy any extra spacing. जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर extra spacing starting में है, तो मैं इसे remove कर दूंगा. Come back to here. Paste it here under the field value. And from the starting, I will remove the extra spacing. Click on the add field button now. ध्यान क्या रखना है कि जब आप कॉपी पेस्ट करें तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस बार होगा, स्पेसिंग होगी, तो आपको एरर आएगी, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है. नाउ कम बैक टू द लैब, स्क्रॉल डाउन, कॉपी दिस नेम, फील्ड नेम, कॉपी इट वेरी केयरफुली, कम बैक टू हियर, पेस्ट इट हियर. फ्रॉम द स्टार्टिंग आई विल रिमूव दिस एक्स्ट्रा स्पेसिंग. नाउ कम बैक टू हियर, नाउ कॉपी दिस कोस्टा, दैट इज आवर फील्ड वैल्यू, कम बैक टू हियर, पेस्ट इट हियर. नाउ क्लिक ऑन द ऐड फील्ड बटन. नाउ कम बैक टू हियर अगेन, नाउ कॉपी दिस न्यू नेम, दैट वुड बी आवर फील्ड नेम, कम बैक टू हियर, पेस्ट इट हियर. नाउ for this field value will remain empty, so simply click on the save button. Wait for it to get saved. Once you are done with that, simply come back to the Dialogflow. Come back to the Dialogflow. Click on this fulfillment button. Now here you will see an inline editor. Click on this. We need to enable it. Scroll down. Click on the deploy button, and the deployment will take around 4 to 5 minutes. 4 से 5 मिनट लेंगे, तब तक आपको वेट करना होगा, ठीक है. जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे. So simply sit back and relax. Once your deployment get completed, you will see a message like this. It means our deployment is successfully created. Simply come back to the lab. Scroll down. Now keep scrolling. Now click on this file, right click on this, open it in private window, otherwise आपकी ये फाइल डाउनलोड नहीं होगी. एक फाइल का लिंक है, zip file will start to be download. Save it wherever you want. Click on the save button. Now come back to the Firestore or the actual Google Cloud Console. Now in the search bar, remove it and type for the cloud functions. Type cloud functions and open the cloud functions. Make sure आपकी जो zip file है वो डाउनलोड हो गई हो. Now we can cut this. Wait for the cloud functions to be loaded up. So once it's get created, first of all, what we need to चेक आउट इज द ग्रीन टिक. आपके इस फर्स्ट जेन एनवायरमेंट नेम के बिसाइड एक ग्रीन टिक होना चाहिए. अगर नहीं है थोड़ा वेट करिएगा, रिफ्रेश कीजिएगा, जब तक पेज पे ग्रीन टिक ना आ जाए तब तक वेट करना है. वंस यू गेट द ग्रीन टिक, सिंपली क्लिक ऑन दिस नेम, वेट फॉर दिस टू गेट ओपन, क्लिक ऑन द एडिट बटन. वंस द पेज गेट लोडेड, सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. नाउ फ्रॉम हियर वी नीड टू चेंज द सोर्स कोड फ्रॉम इनलाइन एडिटर टू द जिप अपलोड. we need to browse that file that we downloaded right now. जो हमने लास्ट में जो सबसे लास्ट फाइल जो zip file डाउनलोड करी है उसको सिलेक्ट करना है इस बार, ठीक है. that would be a cloud function file. So select it. We need to browse the path. So simply click on this. Wait for the buckets to be loaded up. Click on the second button, second bucket arrow button. Click on this containers arrow button. We will see images folder. Click on the select button. Now you as you can see the deployment button is not activated. Deployment button का भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, स्टेज बकेट्स पे कहीं पे भी क्लिक करिएगा, डिप्लॉयमेंट बटन एक्टिवेट हो जाएगा. क्लिक ऑन द डिप्लॉय बटन एंड वेट फॉर इट टू गेट डिप्लॉयड. इट विल टेक अराउंड 4 to 5 मिनट. कंप्लीटली डिप्लॉय होने में 4 से 5 मिनट लेगा, तो आपको वेट करना है 4 से 5 मिनट. आपको ये बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपको 4 से 5 मिनट बाद डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ है या नहीं. यहाँ पर तो ग्रीन टिक आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो लोडिंग हो रही है, यहाँ पर जब ग्रीन टिक मिल जाएगा, इसका मतलब इस जगह पे डायलॉग फ्लो पे जब यहाँ पर ग्रीन टिक मिल जाएगा, इसका मतलब हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है. तो हमें जब तक यहाँ ग्रीन टिक नहीं मिल जाता तब तक वेट करना है. ओके. Once your deployment get completed, simply come back to the lab, scroll down, click on the check my progress. For the task 4, you will get a green tick here also. Okay, you can see assessment is completed. Now click on this task 8 and you will be directed to the task 8. उससे पहले हमें कुछ नहीं करना है, आपको बाकी सारे steps जो हमें skip करने हैं. Now in the task 8, what we need to do, simply scroll down and copy this entity name, that is shirt size. Copy it very carefully. Now come back to the lab, click on this dialog flow, click on the entities. We need to create a new entity. Click on the create entity button. Now paste the entity name. Make sure कोई extra spacing now. Now we need to create the samples here. So for that, for those intents, follow me. What you need to do, so first of all, click on this. Now type extra large, extra large, hit enter button. Now type double XL. Now hit enter button and type extra large, hit enter button. Okay. Now same in the same way we will create some more intent, and the next one will be for the medium. I am hit enter button. Now type M and hit enter button. Now come here. Now we will create for the small. Hit enter button. Type S. Now create one more. Type large. Hit enter button. Type L. Now create one more. That would be for the extra small. Hit enter button. Type XS. Now we need to create one more. That would be our extra large. Hit enter button and type XL. Okay. Now we can click on the save button. Wait for it to get saved. Now we will create a new intent. So click on this. Now click on the create intent. Now for the intent name, come back to the lab and copy this name, get shirt size. Copy it very carefully. Copy it. PNC मैंने जो भी अभी पहले किया था अपने मन से नहीं किया था, हमें ये दे रखा था कि कौन कौन से स्पेसेस क्रिएट करने हैं, वही मैंने क्रिएट करे हैं. Now come back to here. Paste the name of the intent that we copied.
Now we need to add some expression here. So follow me once again. Type XS and hit enter button. Now type XL, hit enter button. Then M, then L, then S, and last one will be XX and L. Okay. Now scroll down. We need to add a phrase. Yes, we need to add the phrase here, text response. So come back to here, scroll down, and keep scrolling, and copy this thank you phrase. Copy it very carefully. Come back to the end here, paste it here, and click on the save button. Wait for it to get saved. Once it gets saved, simply come back to the lab, click on the check my progress. You will get the green tick in the task 8 also. You can see assessment is completed. If in any case you throw any error, then simply try to 2 to 3 times for the check my progress. You will get the green tick for sure. Congratulations, our lab is now completed. Simply click on the end lab button, click on the submit button, give the star rating that you want to give. You can also leave any additional comment. Click on the submit button, come back to the main page. We will verify whether the lab is actually completed or not. जैसे ही हमें लैब के beside में green tick मिल जाता है, मतलब तब हमारी लैब complete हुई है. तो वही check करेंगे. Scroll down, keep scrolling, and you will see a green tick beside our lab. It means we successfully completed our lab. Okay, so this is the solution of this lab. If you have any query, you can ask me in the comment box or on the Telegram group. And if you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button. Okay, so that's it for this video. Thank you very much. Goodbye.